be difficult for you to create the bottom-up parser table. And for that, you will have to be very swift in calculating the first function and follow function. Okay, so in bottom-up parsing, let me remind you, the name itself is suggesting that the creation of your parse tree will be followed from the leaf level towards your root level. So that means you will be exposed to lower level. Like for example, if any string is given like this, a, then b, suppose this is given. Okay, and suppose this is given as S produces A, and suppose this is given as T produces BB. So what I'm doing, I'm creating my parse tree and approaching towards left. I mean towards the root node, towards up. Okay. So and suppose this is my A, and A is my root node. So that means I will be exposed to the leaf level first in case my input string is given, and then I will try to create or complete my subtree first. So I have completed this subtree first, then I have started creating this subtree, and with the help of these two subtrees created, I am completing my whole tree. Okay, so this is the approach you will be following. So for that, when you are creating a subtree, so then you are basically reducing something. Okay, so reducing what? Reducing your right hand side with its left hand side. So when you are reducing, so you are creating your subtree's parent node. Like here, if I am having this kind of production, S produces AA, so that means this AA can be replaced by its left hand side S. So that is what I have done here in this subtree. Okay. Similarly, suppose this production is given that T produces BB. So then when I have got this BB in my leaf label, I have reduced this with its left hand side, capital T. ठीक है, जैसे ही मुझे एस टी both I have got. So suppose another production was given to me कि capital A produces ST. Suppose ये मेरे क्वेश्चन में ही जरूर दिया हुआ रहेगा. ओके, सो जैसे ही मुझे एस और टी अवेलेबल हो गया एट दिस लेवल, so then I planned कि ST should be reduced with its left hand side capital A, and this capital A is the start symbol of my production set. So that means I am done, my derivation tree is complete. But here the approach is from your lower level towards your root level. Okay, so this thing you have to keep in mind, that you are dealing with the bottom up parser. So in bottom up parser, the input string is constructed at the beginning. Okay, that means leaves are constructed at the beginning, and then you start working towards the root or towards the top node. So this bottom up parsing involves reduction. Any input string W will be given to you. For that input string W, with what symbol you can reduce, that you will look at the production set. In each production set, whatever symbols are present or whatever combinations of symbols are present in the right hand side, with that you will try to reduce its left hand side. Like here, when I have got AA combination, so then I planned that I will reduce this AA with its left hand side S, because S का production दिया हुआ है कि S can produce AA. So when I have got this AA at my bottom level, so I planned कि AA का जो parent node है S, so इसको reduce होना चाहिए with S. Similarly, when I have got this input string BB, I thought कि इसको reduce करना चाहिए with its left hand side capital T. So that is why I have created this parse tree. And when at this level I got both the symbol S and T, then I thought कि ST should be reduced by its left hand side capital A, and so on. इस तरीके से whenever any substring you are choosing, so for that substring which you have chosen, there might be some reduction possible.
given in your production set. So you have to find for those reduction steps, because ये जो tree मैंने create किया है, इस tree का मैंने creation एक level पे नहीं किया. This is level 0, this is level 1 and this is level 2. So that means at each step आप find करते गए कि इस लेवल पे कौन कौन से रिडक्शंस एप्लीकेबल होंगे. आपने ये कंसेक्यूटिव रिडक्शन वाला स्टेप आपने अप्लाई किया, और अप्लाई करना मतलब आपने राइट मोस्ट डेरिवेशन पे जो आपका सिंबल्स प्रेजेंट है उनका कॉम्बिनेशन बनाया, और बनाने के बाद आपने सोचा कि इसको इसके लेफ्ट हैंड साइड से रिड्यूस कर देते हैं. ओके, सो यू हैव गॉन फॉर इट्स रिपीटेशन till you are not finding the right root node for the whole subtree or the whole tree. क्योंकि आपने जब ये S produces A का ये छोटा सा सब ट्री आपने क्रिएट किया था, तो S is not a starting symbol here or not a root node of the whole tree. This is just a parent node of this subtree, right? Similarly, T produces BB. जब आपने ये सब ट्री क्रिएट किया था, in this subtree also आपने नहीं सोचा था कि T will be the root node for the whole tree. T is only a parent node for this subtree. So that is why you opted for that reduction at this level. So जब आपको total tree का आपको root level मिल जाएगा, there actually you will stop your this recursive process of reduction. Okay. So यहाँ पे हम लोग इसलिए in our bottom up parser में we choose our substring in such a way that for that chosen substring correspondingly any reduction is possible from your given production set. Okay, so रिडक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ स्टेप्स हम लोग अप्लाई करेंगे. तो इसके लिए हम लोग LR पार्सर को this follows the grammar which is LR. यहाँ पे हम लोग जो ग्रामर फॉलो करते हैं दैट इज नोन एज LR. L और R का दो मीनिंग है. जैसे वहां पे टॉप डाउन पर्सन में यू यूज टू फॉलो LL ग्रामर, वैसे बॉटम अप पर्सन में यू यूज टू फॉलो LR ग्रामर. सो दिस L stands for when you will scan your input string, you should scan it from left to right. Okay, and R stands for the right derivation first. So that means मैंने अभी कहा कि आप always right hand side में क्या है वो देख रहे हो और उसको reduce कर रहे हो with its left hand side. So every time you are looking at the right hand side derivative way. ओके जैसे वहां पे लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव वे में आप आगे बढ़ रहे थे कि आप अपना लेफ्ट हैंड साइड देख रहे थे और उसको एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे थे. यहाँ पे जस्ट उसका रिवर्स होगा कि आप राइट मोस्ट डेरिवेटिव वे में आप आगे बढ़ोगे. ओके तो इसलिए यहाँ पे रिडक्शन का बहुत ज्यादा वैल्यू है. सो दैट इज व्हाई we also call this LR parser as a shift reduce parser because it follows the process of reduction. And see, when you are creating your parse tree which is constructed from bottom to which follows the bottom up approach, you actually start your journey from the leaf level and end your journey when you reach to the root level or root node when you have got. Okay, so if I suppose I give you any, suppose एक प्रोडक्शन आपको सपोज मैंने दे दिया. ओके लेट्स सपोज कि आपके पास एक ऐसा प्रोडक्शन आपको दे दिया गया है कि S produces small a, capital A, then small c, then capital B and small a. Okay, this is one production given. Another production given, A produces capital A followed by B oblique small b. Okay, another production given, capital B produces small d. Okay, suppose ये production आपको दे दिया गया and you are given a input string like this, that A, B, B, C, D, E. Suppose this type of input string is given to you.
and you are being told tell me whether this input string is accepted by your parser or not, suppose. And that parser follows bottom up approach. Then how should be your series of reduction in this case? So what you should do, you should first go ahead with the leaf level. First, you start your journey from your leaf level. So in your leaf level, this input string is given to you. So let me copy this. ओके अच्छा, इस इनपुट स्ट्रिंग में आपको जब आपको रिडक्शन करना रहेगा, देन ऑब्वियसली यू शुड सी कि यहाँ पे ऐसा कोई रिडक्शन लीफ लेवल पे पॉसिबल है. यस, इट इज पॉसिबल, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि योर बी कैन प्रोड्यूस स्मॉल डी. सो व्हेन यू हैव गॉट दिस डी in your input string, so straight away you can tell that this b I can put here. Okay, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो कि आपका जो सिंबल है, you should always scan from the left to right, because I have already told that you should follow LR grammar. So L stands for you have to scan your input string from left to right. If in your left side any symbol comes for which your reduction is possible, then first you should go ahead with that. So here when you are scanning A यहाँ पे राइट हैंड साइड में किसी का यहाँ पे जनरेटेड नहीं है. देखो, no one is generating, only single A, no one is generating. But when you have gone ahead one symbol right, you have got B. So B is possible because B can be generated from your left hand side derivative capital A. So that means definitely I should go ahead with this symbol first. Okay, so यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ये जो मैंने लेफ्ट टू राइट स्कैन करते वक्त मुझे जो सिंबल मिला B, उस B को मैं पहले रिडक्शन करूंगी विथ इट्स लेफ्ट हैंड साइड कैपिटल A. So this B, sorry, this B will be replaced by its left hand side capital A. So this B will be replaced by capital A. Then I will keep all other symbols as it is. In my next step, when I will again scan, I will get from left to right, I will get another combination, that capital AB. So this capital AB, when I have got, I thought, yes, it is possible that I will replace this AB with this left hand side capital A. So this both will be reduced by its left hand side capital A. So then this changes will be A followed by capital A, then C, then D, then E. Okay. Just remember, when you are scanning, your scanning should be always from left to right. यहाँ पे मैं लेफ्ट टू राइट स्कैन करके ही मैं यहाँ पे सबस्ट्रिंग खोज रही हूँ, जिस सबस्ट्रिंग को मैं उसके लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव से मैं रिप्लेस कर पाऊँ या फिर रिड्यूस कर पाऊँ, बिकॉज हियर आई हैव टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ रिडक्शन, राइट. सो यहाँ पे जब मैंने स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल ई मैंने जब यहाँ पे रिसीव किया, तो ये वाला देखो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का पार्शियल पार्ट है, बिकॉज यहाँ पे मुझे अभी तक बी मिला नहीं है, राइट. सो मुझे बी को एक्वायर करना पड़ेगा. सो फॉर दैट आई नीड दिस डी टू बी रिप्लेस्ड विथ बी, then only I can reduce this, right? So I will do that. A, then capital A, then small c, जैसा है वैसे ही रहा. Then जो small d है, उस small d को I can replace with its left hand side or reduce with its left hand side capital B, and then E will remain as it is. So in this case, when I have got this whole right hand side handle which belongs to this production of S, then I can say the whole thing can be reduced with its left hand side, which is S. Okay. When I have got this S, which is the root node or starting symbol of the whole production, then I will stop my derivation or stop my reduction process. Okay. So then step by step, again reminding you how I have approached. First,
Mhm. There are some decisions I am taking out of the whole lot. Okay, so consider this. I'm asking. Oh, shit. He's gone. Johnson. On my square is deleted. Okay, anyway, then I will draw it once again. Not to worry. So my production was S produces small a, capital A, small c, capital B, small e. This was my first production. Then my second production was A produces capital A, B, oblique small b. And my third production was B produces small d. So these are my three productions. And I have been given a input string where A, B, B, then C, then D, and E. This string I will have to check. Okay, so for that I have started scanning from the left to right. When I have got this B symbol, the first B symbol in the left, so it is possible to reduce. So I have started doing reduction by its left hand side, so that small b will be replaced by its left hand side capital A. So I will put capital A instead of this first B, small b, and then second B will remain as it is, then C, then D, and then E. Okay. Next, when I have again started scanning this string from the left to right, this AB is the right hand side handle of capital A. So I will replace this AB with capital A. So I will put A followed by capital A, then C, then D, then E. Okay. Next, for acquiring the right hand side handle of capital S, I need to replace this D with its left hand side B. So I will do that. So A, then capital A, C, that D will be replaced by capital B and E will remain as it is. So this is the right hand side handle of my starting symbol S. So I will replace the whole as S. Okay. So in this reduction process, I will just underline the symbols which are chosen for reduction. So this B is chosen for reduction, and then this whole AB is chosen for reduction, then this D is chosen for reduction, and this whole thing is chosen for reduction. Okay, so यहाँ पे मैंने underline करके दिखाया है कि आप bottom up approach में जब आप reduction करते गए, so how did you approached? So यहाँ पे basically आपके पास bottom level पे अगर मैं tree draw करूँ, so आपके पास इस तरीके का ये string दे दिया गया था, C and then D and E. ये सारे symbols input string या फिर right hand side handle जो भी आप बोलो, that is being given to you. W is given to you. ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से शुरू किया अपना reduction करना. So this you have reduced with its left hand side capital A because it is saying that A can produce small b, right? So जैसे आपने ये reduction किया, this A and B, this two can produce again a capital A. So this two can be reduced with its left hand side capital A, and then this D you can reduce with its left hand side capital B, and then this whole small a, capital A, then small c, capital B, and small e. The whole thing can be reduced by its left hand side capital S. Okay, so this is how you have stopped your
reduction process, because you have reached to the root node, which is your motto. So you have started your journey from the bottom level till you are not reaching to the root level. Okay. So let's see what my slides are telling. Slides are also telling in the same fashion that you will continue your journey from the bottom level till you are not reaching to the root level or reaching to the top. So if this input string id into id is given to you, so this is your input string, or your w is given to you, and the production set is given in the below, right? E produces e plus t oblique t, t produces t cross f oblique f, and f produces bracket of e oblique id. So for this id can be replaced with its left hand side f. So that is why the first id is replaced with f. That f can be replaced by its left hand side capital T. So that you have replaced, that f is replaced by capital T, and that t is replaced by your capital E. Okay. So likewise, if you replace, then what you will get? E into E, or rather E plus T also you can get, or you can get T into F. So here up to when you are getting T into F, there you have stopped, because when you are getting T into F, then you have a provision again to reduce it, because this T into F can be reduced with capital T only, single T. Okay, here it's written wrong. So here you can easily write that T into F can be reduced with T, and that T you can reduce with its left hand side capital E. Okay, so इसको अगर हम लोग ड्रॉ करें अपने बोर्ड पे तो ये कैसा दिखेगा? You have been given this grammar. E produces E plus T oblique T. Then it is given T produces T cross F oblique F. Then your F can produce bracket of E oblique ID. F can produce bracket of E oblique ID. Okay. And the input string given to you is ID into ID. Okay, and you are being told whether this input string is accepted by your parser or not. Okay, so here that means this ID is one symbol followed by an asterisk sign, another symbol followed by ID, third symbol. Okay, so you have to check from here. So definitely you will start your scanning from the left to right. So this ID can be replaced by its left hand side F. So this will be replaced with F. So F into ID you will get in your first iteration. Okay. Next, this F can be replaced by T, because F ka left hand side T hai. So then you will get T cross ID. Okay. Next, this T can be replaced by small e, capital E, but I will not go into that, because my target is to achieve this starting symbol capital E. So what I will do, I will scan it forward. I will take this asterisk as a next symbol, but asterisk is not a right hand side of any productions non-terminal. So I will skip that. I will again go ahead. I will scan ID again. So then I will start replacing this ID. So this ID so you will get T, then cross you will get T, then cross ID को आपने replace किया with F.
It is going. F, okay, then ये T cross F को you can replace easily with single T. बस T cross F का लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव जो है वो T है, so मैंने T से रिप्लेस कर दिया और जैसे ही मुझे T मिला then I can easily replace this T with capital E, which is the starting symbol or root node of the whole tree, right? तो यहाँ पे अगर मैं डेरिवेशन या फिर रिडक्शन अगर मैं काउंट करूं कि कितना रिडक्शन हुआ, this is first reduction because ID has been replaced with F, then F is being replaced with T, okay, then again in the next step this ID will be replaced with F, and in this step whole this T cross F is replaced with T, and this T is again replaced with its left hand side capital E. Okay, so अगर मैं draw करूं diagram, so this is my leaf label which was given to me. So ID asterisk ID ये मुझे दे दिया गया था, इस ID से मैंने पहले रिप्लेस किया F को because मैंने लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग किया है, so first this ID will come, उसके बाद इस F को मैंने रिप्लेस किया with T, then I left it here, या इतना तक मैंने रख दिया, उसके बाद मैंने इस ID को सेकेंड ID जो है उसको मैंने रिप्लेस किया with F. Okay, now this asterisk, this F and this T, this is all together is forming a single T. Okay, then from this single T it is forming the root node capital E. So this is how, by following these successive reductions from bottom side towards up side, you create your LR parsing tree or parsing tree in a bottom up approach. Okay, so in your bottom up approach the process of replacement of your right hand side of the production by its left hand side. Okay, reduction means always you will replace your right hand side by its left hand side, and you will obviously you will follow some sequence. ऐसा नहीं है कि आप randomly किसी को भी कहाँ से भी पिकअप करो और रिडक्शन कर दो, ऐसा नहीं होता है, but your target will be always to achieve your start symbol at last, because यहाँ पे देखो मैंने जब यहाँ पे E को मैंने अचीव किया, so E is my start symbol, right? Similarly यहाँ पे भी S is my start symbol. Okay, तो यहाँ पे मुझे जब भी इनपुट स्ट्रिंग को मुझे डील करना है, I will have to scan it from the left to right, so that is why LR, L stands for left to right scanning. L में अगर L से स्कैन करते हुए अगर मुझे कोई राइट हैंड साइड ऐसा हैंडल मिला जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन सेट के लेफ्ट हैंड साइड से रिप्लेस हो सकता है, then I will go ahead with that reduction, जो कि मैंने यहाँ पे दो प्रॉब्लम सम में मैंने अभी करके दिखाया. ओके, सो इसलिए मुझे यहाँ पे जब भी रिडक्शन करना रहता है, I will always trace out that what is my rightmost derivative of each production. हाँ, जैसे कि मेरे यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ये मेरा राइट टोटल चीज जो है वो राइट मोस्ट डेरिवेटिव है, बिकॉज जब तक मुझे ये E प्लस टी टोटल एज ए होल नहीं मिलता है तब तक मैं इसे कैपिटल E से रिप्लेस नहीं कर पाऊंगी. सिमिलरली unless and until I am getting this total rightmost derivative T cross F, I will not be able to replace this with its left hand side capital T. Okay, similarly यहाँ पे भी this whole bracket of E जब तक मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं इस F से रिप्लेस नहीं कर पाऊंगी. तो यहाँ पे आपको राइट मोस्ट हैंडल के ऊपर ज्यादा ट्रेस देना पड़ता है. एंड जब भी आप सबस्ट्रिंग को पिकअप करते हो तो पिकअप करते वक्त आपको रिप्लेसमेंट जब भी चूज करना होगा, यू विल ऑलवेज फॉलो द लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग. ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि राइट कभी आपने लेफ्ट से स्कैनिंग किया और आपको राइट हैंड साइड में हैंडल मिला, उसके नेक्स्ट स्टेप में आप राइट से लेफ्ट स्कैनिंग करने लग गए, ऐसा कभी नहीं करना. ओके, यू विल ऑलवेज फॉलो द ऑर्डर मींस लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग ऑर्डर. ओके,
ऐसे करते करते जब आप सीक्वेंशियल कुछ प्रोडक्ट मतलब रिडक्शंस करोगे, रिडक्शन करते करते रिप्लेसमेंट करते करते एक समय ऐसा आएगा कि यू विल रीच टू योर स्टार्टिंग सिंबल, देयर यू विल स्टॉप योर पार्सिंग, ओके, बिकॉज यू हैव फाउंड आउट योर whole tree's root node. So in your bottom up parsing, the parse tree for the input string is constructed at the bottom nodes, and then you start working upwards to reach to the root node. Okay, so this is called your reduction. The process of right hand side production replacement with its left hand side is known as reduction here. Okay, and if you say, if anybody asks you that what is handle, so handle ka matlab hota hai the substring which is at the right hand side of any production, and that right hand side can be used, or that right hand side or substring can be used as a replacement towards its left hand side. Then that will lead to a reduction operation, and that rightmost hand side rightmost side substring or rightmost side collection of symbol is known as a handle. Because here देखो, जब मैं E produces E plus T मैं जब लिख रही हूँ, इसका मतलब ये है कि E plus T as a whole जब तक आपको टोटल नहीं मिल जाता तब तक आप उसको उसके लेफ्ट हैंड साइड कैपिटल E से रिप्लेस नहीं कर पाओगे. Only suppose you have got E n plus, so it is not enough to replace. Okay, so ये टोटल सबस्ट्रिंग आपको एज ए होल आपको मिलना चाहिए. एज ए होल जब आपको मिलेगा तभी आप उसको एक हैंडल की तरह ट्रीट कर पाऊंगी, और इस हैंडल को आप उसके लेफ्ट हैंड साइड सिंबल से रिप्लेस कर पाओगे. ओके, सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, देन यू शुड नो दैट व्हेन यू आर डूइंग this rightmost derivation in a reverse direction, then a sequence of reductions you are following. So this sequence by which you are obtaining your root node, that sequence of reduction by which you are obtaining your root node, that sequence of action is known as handle pruning. Okay, so in your getting your handles and replacing, getting your handles and replacing till you are not getting your root node. So this sequence of reductions is as a whole known as handle pruning. Okay, now to construct your derivation tree in a reverse order. Why I am talking here reverse order? Because here the just opposite approach you are following, which approach you have followed in your top down parser, जब आप बॉटम अप पार्सिंग कर रहे हो आप उसका जस्ट ऑपोजिट वे में आप आगे बढ़ रहे हो, मतलब कंस्ट्रक्शन कर रहे हो अपने डेरिवेशन ट्री का. मतलब आपके पास राइट हैंड साइड जब तक अवेलेबल होगा उसके बाद जाके आप उसको लेफ्ट हैंड साइड से रिड्यूस कर पाओगे. अगेन राइट हैंड साइड अवेलेबल होगा उसके बाद जाके आप उसके लेफ्ट हैंड साइड से रिड्यूस कर पाओगे. सो दिस रिवर्स ऑर्डर यू आर फॉलोइंग टू गेट बैक योर होल ट्री. ओके, तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग एक ऑटोमेटेड प्रोसेस में अगर हम लोग डाल देते हैं इस हैंडल प्रूनिंग को, तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या क्या एक्शन हमने किया, व्हाट एक्शन वी हैव कैरीड आउट व्हेन वी आर डूइंग दिस हैंडल प्रूनिंग. वी हैव फर्स्ट लोकेटेड द हैंडल इन द राइट सेंटेंशियल फॉर्म. सो हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो भी मुझे कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल मिला है, इज इट एलिजिबल टू बी रिप्लेस्ड बाय इट्स लेफ्ट हैंड साइड. Unless and until I am getting the whole right hand side sentential form, I will not be able to replace that with its left hand side, right? So first you have to locate that कि आपको handle का right hand side total मिला है या नहीं. And for that obviously you are making a choice. So when you are scanning from the left to right, so in that case every time you are scanning from the left towards right, you are finding whether any substring I have got for replacement or not in this level, right? So different alternatives you can get in this step, but you have to only choose that alternative which is following this LR grammar. So यहाँ पे जब आपने देखा था कि जब मुझे ये स्टेप जब मैंने परफॉर्म किया था, इस स्टेप में मुझे दो ऑप्शन मिला था. आइदर आई कैन रिप्लेस दिस ए बी with capital A, or I can replace this D with capital B, right? I have got these two options.
but among these two alternative I have chosen this first one. Why? Because I have to follow the principle of LR grammar. So left to right scanning and right most derivative first. Okay, so यहाँ पे इसलिए हमें जो प्रोडक्शन हमने चूज किया उनमें डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अगर हमारे पास अवेलेबल हो भी तो मुझे प्रॉपर सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द LR ऑर्डर. Okay. Next, the parsing action, when you have started, you can use a stack for maintaining that who is on the top of the stack. मतलब अगर मान लो कि this E plus T को अगर हम लोग stack के top में रखते हैं, तो that means this E will be at the bottom, then plus is being pushed on top of that, and then T is being pushed on top of that. Okay, so basically when I will try to replace this T plus E with its left hand side capital E, then I will take all these from the top of the stack. Okay, and then I will replace this with its left hand side symbol capital E. Okay, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग स्टैक को यूज करते हैं कि कौन कौन से सिंबल्स मेरे यहाँ पे कलेक्ट हुए एंड टॉप ऑफ द स्टैक्स में क्या ऐसे कोई सिंबल्स प्रेजेंट है जिसको हम लोग अगर कंसेक्यूटिव हम लोग अगर एक्सट्रैक्शन करें या फिर पॉप करें, then it can be a handle of anybody's left hand side. Okay, if it is a handle, right hand side handle of anybody's, then we will replace that with its left hand side. जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि E plus T जैसे ही यहाँ पे मेरे टॉप ऑफ द स्टैक में कलेक्शन हुआ था वैसे हमने इनको पॉप कर दिया. पहले T को पॉप किया, प्लस को पॉप किया, कैपिटल E को पॉप किया और पॉप करने के बाद उसके अकॉर्डिंगली जो उसका लेफ्ट हैंड साइड सिंबल है उससे हमने टॉप ऑफ द स्टैक में पुश कर दिया. तो इसका मतलब हमें एवरी टाइम इस स्टैक को मेंटेन करना पड़ता है. ओके, तो अगर ये जो ऑपरेशन आपने ए बी ऊपर वाला जो देखा, अगर इसी चीज को अगर हम लोग स्टैक के जरिए अगर हम लोग करने जाए, देन हाउ वी विल डू, लेट अस सी. Whatever I explained, and then you will be averaging, you are average or you will be average, and then you will be selecting the answer. You can study the rules and forms of the device. I will create a stack here और stack के contents क्या होगा वो भी मैं दिखाऊंगी यहाँ पे. अच्छा, तो यहाँ पे सॉरी, पहले मैं यहाँ पे एक if this is my stack, तो यहाँ पे स्टैक में हम लोग पहले क्या करेंगे, सारे सिंबल्स को वन बाय वन हम लोग स्कैन करते हुए चलेंगे. सो फॉर दैट द लेफ्ट हैंड साइड आई विल कीप फॉर स्टैक कंटेंट. दिस इज माय स्टैक कंटेंट. देन इनपुट स्ट्रिंग क्या अवेलेबल है मेरे पास, एंड देन व्हाट इज द एप्रोप्रिएट एक्शन व्हिच आई हैव टेकन. ओके, सो यहाँ पे एक्शन का डिटेल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. ओके, तो यहाँ पे जब हम लोग नॉर्मल कोई इनपुट स्ट्रिंग को स्कैन कर रहे हैं बट वी आर नॉट डूइंग एनी डिडक्शन, सो देन दैट मीन्स आई एम शिफ्टिंग वन पोजीशन टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, बिकॉज लेफ्ट टू राइट हमें स्कैन करना है. सो आइदर यू कैन डू शिफ्टिंग और यू कैन डू replacement. Okay, so that is why this type of parser is known as shift reduce parser. LR parser को हम लोग shift reduce parser इसलिए बोलते हैं कि either आप involve होते हो कोई shift operation में, मतलब you are pushing that in your stack, and if you are not pushing, you are planning for any replacement, then you are reducing that. Okay, so इसके लिए हमें proper stack content क्या है, every time we will have to watch कि मेरे स्टैक में क्या कलेक्शन हुआ और उसके अकॉर्डिंगली मैंने अभी क्या एक्शन लिया. ठीक है, तो मान लो कि ये वाला जो स्ट्रिंग आपके पास दिया हुआ है ABCDE, ये वाला स्ट्रिंग आपको दे दिया गया है. ठीक है, सो ये वाला स्ट्रिंग एट द बिगिनिंग
योर स्टैक कंटेंट विल बी एम्प्टी। सो एम्प्टी स्टैक को दिखाने के लिए हम लोग डॉलर यूज करते हैं, और इनपुट स्ट्रिंग आपके पास अवेलेबल है, उसको हम लोग लिख लेते हैं कि ए बी एंड देन सी देन डी एंड देन ई। सो ये वाला इनपुट स्ट्रिंग आपको दिया गया है। ओके, तो अभी आपने क्या किया कि जो पहला सिंबल है लेफ्ट में, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आप स्कैनिंग कर रहे हैं, सो पहला सिंबल जो आपने स्कैन किया दैट यू हैव शिफ्टेड टू द स्टैक। सो यू हैव डन शिफ्ट। ओके, सो शिफ्ट को मैं यहाँ पे एस लिखूंगी और रिडक्शन को मैं आर लिखूंगी। ओके, सो यू हैव शिफ्टेड योर फर्स्ट सिंबल ए। सो दैट मीन्स आपका स्टैक में ऑलरेडी डॉलर था विच वॉज एम्प्टी स्टैक मार्कर, उसके बाद आपका पहला सिंबल ए स्टैक में आ गया। सो व्हाट इज द रिमेनिंग इनपुट स्ट्रिंग यू आर हैविंग बी followed by b, then c, then d and then e. These are the remaining input string you are having. Now again it's time to scan the next symbol which is b. Okay, so जैसे ही आपने यहाँ पे b देखा, so again you have shifted that to shifted that to stack, क्योंकि जब तक आप स्टैक में शिफ्ट नहीं करोगे, तो आई एम राइटिंग एस एच। ओके, तो जब तक आप शिफ्ट नहीं करोगे तब तक आपका रिप्लेसमेंट नहीं होगा। सो योर स्टैक कंटेंट हैज बिकम ए फॉलोड बाय बी। ओके, अब जब यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टैक में बी कलेक्ट हुआ, तब आपको यहाँ पे प्रोडक्शन सेट से देखने को मिला कि बी कैन बी right hand side handle for your non-terminal capital A, right? So you can replace this B with capital A. So at that time you plan for reduction. Okay, so what you have done, you have kept your rest of the symbols as it is, B C D E जैसा input string है वैसा आपने जैसा है वैसे ही रहने दिया, और ऊपर जो टॉप ऑफ द स्टैक में ये जो B कलेक्ट हुआ है, B को आपने रिप्लेस कर दिया। सो दैट मीन्स you have reduce this capital A produces B, क्योंकि आपको उस B को रिप्लेस करना है जो कि आपके टॉप ऑफ द स्टैक में है बाय इट्स लेफ्ट हैंड साइड। तो जैसे ही आपने रिड्यूस ए प्रोड्यूसेस बी किया, सो आपके स्टैक का कंटेंट में क्या चेंजेस हो गया, दिस बी विल बी पॉप्ड एंड उसके जगह पे उसका लेफ्ट हैंड साइड विल बी रिप्लेस्ड। सो आपके लेफ्ट हैंड साइड रिप्लेस हुआ, मतलब बी के जगह पे आपका कैपिटल ए आ गया। नाउ अगेन यू विल गो बैक टू योर इनपुट स्ट्रिंग फॉर स्कैनिंग। तो आपने बी को स्कैन किया, so इसका मतलब आपका रिमेनिंग सिंबल्स क्या है, यहाँ पे आपने शिफ्ट ऑपरेशन किया बिकॉज आपको बी को पुश करना है इन योर स्टैक। सो आपका रिमेनिंग क्या रहेगा, सी डी एंड ई। ओके, देन यहाँ पे अगर शिफ्टिंग आपने किया है तो स्टैक का कंटेंट चेंज क्या होगा, ऑलरेडी ए था यहाँ पे, उसके बाद स्मॉल बी, सॉरी स्मॉल बी नहीं, स्मॉल कैपिटल ए था, उसके ऊपर टॉप ऑफ द स्टैक में आ गया स्मॉल बी। ओके, नाउ व्हेन यू हैव गॉट दिस कैपिटल ए, उसके ऊपर टॉप ऑफ द स्टैक में बी, देन यू थॉट दैट दिस कैन बी one reduction because this AB is anybody's right hand side handle. Whose handle? Capital A का जो right hand side का handle है. Okay, just wait for a second. Very convenient for you.
Sorry for interruption because from CRTT one call has come urgently. So which I was telling that when in my top of the stack, I got these two elements in the top and next to the top. So it can be any production's right hand side handle, A followed by small b. So then I will replace this AB with its left hand side capital A. So that means I am opting for a reduction operation. Okay, so I will reduce this capital A produces AB. These are the set n sets of moving data is there. Okay, you need to. Okay, so then rest of my input string will be here as it is because I have opted for reduction. So my stack content will change. So my stack content will become right now small a followed by capital A. Okay. Now again I will scan this symbols in my rest of the input string. So this is again a shift operation. The shift operation means I'm only remaining with DE. So in my stack, I'm available with small a, capital A, and this C is been shifted. Small c is been shifted. Okay. Then again, this D is shifted. So again, I have opted for shifting operation. So I'm remaining with small e. So this is the stack content, small a followed by capital A, then C, and then D. So when I have got this D on the top of my stack, again I thought that this is a right hand side handle for any non-terminals, which is B. So I can replace this capital small d with its left hand side capital B. So definitely I will do that. So I will reduce. So this action is a reduction action. So I will reduce this B produces T. Okay. So B can be reduced. Okay, so then my stack content will change accordingly. So this will become A, capital A, then C. Okay, then this will be capital B. Okay, now only one symbol is remaining here, which is E. So E is nobody's right hand side handle. So definitely it's a shift operation. Okay, this is a shift. Shift operation, and nothing is remaining in my input string. So I will get empty string. Okay, dollar. So if this symbol is shifted to the stack, then my stack will change small a, capital A, small c, capital B followed by E. Now when I have got these elements in my top of the stack, so I thought this can be the right hand side handle of my S. So I can replace this whole thing with its left hand side. So I will reduce this. This is a reduction operation. So this reduction can be for your S. So S produces a whole thing. That means small a, capital A, then small c, capital B, followed by small e. Okay, so this is a reduction operation. So in this case, my stack content will be changed and the whole thing will be replaced by its left hand side S. So when there is no any string in the input string, and I mean no any symbol in the input string, and my stack is returning me the starting symbol. So in this case, I can stop my execution or stop my reductions, and I will say that this action is an accept. So that means the whole input string is accepted by your parser. Okay. So there your action will be
accept. Okay, and if this is not the case, that means it is an erroneous case. So in that case, it will generate action as a error. So that means आपके LR parser में या फिर shift reduce parser में there can be 4 type of operation. One is shift operation, another is reduce operation, third one is accept operation, and fourth one is error operation. Okay, so shift and reduce जो है वो तो आपने देखा कि when you are doing push and pop of the symbols and you are taking action according to that, वो आपका बार बार repeat होगा, many shift and many reduction till you are not reaching to the end or till you are not getting the accept operation. So accept operation only tells you about your successfulness. That means your parser has successfully accepted that input stream which you have given as a user. Okay, but in the abnormal situation, if your parser discovers something erroneous, so it can generate your error action also. Okay, so that is the abnormal situation that can occur due to any syntax error. Okay, which is recovered at the recovery routine. Okay, is it clear to all of you? What do you mean by void? बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा कि आपको एक स्ट्रिंग दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि शिफ्ट रिड्यूस पार्सर में आपको यूजिंग स्टैक आपको रिप्रेजेंट करना है. सो इन दैट केस यू शुड नो कि हाउ दिस शिफ्ट रिड्यूस पार्सर में आप शिफ्टिंग और रिडक्शन आप सीक्वेंशियली आप कर रहे हो बाय स्कैनिंग द इनपुट स्ट्रिंग. ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ? It's already 2 o'clock. If nobody has any question, then I will wind up the class after taking your attendance. Anybody is having any doubt? Hello? Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So, one announcement is that in your MS team, I have uploaded the CA3 assignment, whose deadline is at the end of this month. Okay, so that is only for your reference. So you can only view the question from there. But again, its submission to the TCSIN is mandatory. Okay, so you just go through the questions, prepare your assignment for CA3, and when that deadline will come at the end of this month, so then you should upload your assignment of CA3 in the TCSIN. Okay, so for your reference, I have given the same question because from TCSIN you cannot see right now. When the deadline will come, window will open. At that time, you will just upload your assignment for CA3. Okay, so you can view your question in MS Team. Okay, is it okay for all of you? Hello? Yes, Shomita? Anything you want to say? No, ma'am. I can say yes. Okay, okay, okay. Then I'm leaving the class because I have taken your attendance. Okay. Meet you tomorrow.